students, how are you? I hope you all are well. Students, today we will learn chapter number 1. Chapter number 1, that is comparison and shapes. Okay class? Class, these are our learning objectives. So class, let's start the chapter. Now class, question number 1, write the longer object. Write the longer object. हमें उस पर टिक करना है जो लॉन्ग है, मीन्स लंबा है. क्लास, which is longer? So bus is longer than car. Now class, cross the shorter object. Class C, this is a shorter and this is a longer. Class C बहुत लंबी है than this. So this is a shorter object. Now class C, big and small. Big and small class. Class, elephant is a big animal. Elephant is a big animal. Now rat is small. Rat is small. जो छोटा होता है उसको हम स्मॉल बोलते हैं और जो बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिग. ओके क्लास. नाउ क्लास, heavier and lighter. Heavier means भारी and lighter means हल्का. So class C, football is a heavy. Football is a heavy and ball is light. Understand? Now class C, top and bottom. Top and bottom class C. The girl is at the top of the building. Top means ऊपर. Top means class ऊपर. ये जो girl है वो top of the building है, means building के ऊपर है. Now class, the boy is at the bottom of the building. Means building के नीचे. Building means bottom means नीचे. Okay, the boy is at the bottom of the building. Now class, come on exercise 1.1. Now question number 1, टिक राइट ऑन द हैवी. जो ऑब्जेक्ट हैवी है हम उसको टिक करना एंड क्रॉस ऑन द ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट. क्रॉस ऑन द लाइट ऑब्जेक्ट. क्लास सी, हैवी, which is heavy? Ball is heavy and balloon is light. Okay. Now tree is heavy and leaf is lighter. Put cross. Now class, again strawberry is light object. Now cross. And mango is heavy, light. See, book is heavy or light? Heavy. And page is light. Understand class? Now class C, come on question number 2, circle the small object. Small means छोटे object. So this is larger and this is smaller. So it's a small object. Now this is smaller. Understand class? Rest of the parts do yourself class. Now class, come on question number 3, write the correct word to the fill in the blank. Now class C, the cat is at the dash of the ladder. class, ये कहाँ पर है? ladder के ऊपर है, means top पर है. Okay, so we will top. Okay, we will take on the top. Now class B, the dog is at the dash of the ladder. नीचे बोला था मैंने क्लास, which is bottom. So bottom of the ladder. Now class, inside and outside. Inside means class inside means होता है अंदर and outside means बाहर. So class C, the bird is inside the nest. ये bird nest के क्या है? अंदर है. Understood? The parrot is outside the cage. ये जो पिंजरा है क्लास, ये पैरट क्या है? इसके बाहर है. So outside. Now class, after and before. Before and after. Class, before means होता है पहले और after means बाद में. Now class C, the camel is before the goat. The camel is before the goat. यानी कि जो camel है वो goat से पहले है. Before means पहले. Now the chickens are after the hen. ये जो chickens हैं, hen के baby हैं, वो क्या है? hen के बाद है, means after. Understood class? Now class, before means ahead of, after means behind of. ठीक है? Before means ahead means आगे and after means पीछे, behind. Now class C, near and far. Class, near means क्या होता है? पास और far means क्या होता है? दूर. Near means पास and far means दूर. तो class,
The tortoise is near the pond. ये जो pond के पास है tortoise means near है उसके. Now the crocodile is far from the pond. Far means दूर है वो. क्या है? Crocodile pond के दूर है. Now class, come on exercise 1.2. Question number 1. Tick right which is before. Which is before class C. Class before means क्या होता है? पहले. Before means पहले. So girl is before and father is before. Understand class? Now class, come on question number 2. Fill in the blank with near and far. Near means I told you pass and far means दूर. So class, Ruhi is dash the puppy. अब पप्पी के पास क्या है? रूही पप्पी के पास है. सी क्लास, रूही और पप्पी एक दूसरे के पास है. सो क्या आएगा यहाँ पर? नियर. NEAR नियर. अंडरस्टैंड क्लास? नाउ क्लास बी पार्ट. शोभा इज डैश फ्रॉम हर पप्पी. शोभा क्या है? पप्पी से दूर है. सो दूर मीन्स फार. FAR फार. अंडरस्टैंड क्लास? नाउ क्लास, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. Cross the one which is outside. Outside means bahar. The tick and tick the one which is inside. हमें क्रॉस करना है जो बाहर है मीन्स आउटसाइड है, और राइट करना है, टिक लगाना है विच इज इनसाइड. ओके. नाउ क्लास सी. ये क्या है? पेन क्या है? पॉकेट के अंदर है. पेन क्या है? पैकेट के अंदर है. सो हम क्या करेंगे? राइट लगाएंगे. देन ये पैकेट के बाहर है. सो हम उसको क्या करेंगे? क्रॉस. अंडरस्टैंड? नाउ फ्लावर है वास के अंदर है. सो right and flower is outside the vase means cross. Now class, come on straight and curved line. Class straight means क्या होता है? Straight means सीधा और curved means like this. A line may be straight or curved. एक line क्या हो सकती है? Straight भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है और curved भी हो सकती है. Now class see, these are straight lines. जो एकदम सीधी होती है वो क्या होती है? Straight lines होती है. And class this is These are curved lines. जो जिनका कोई शेप नहीं होती क्लास. ये कहीं से भी हम आपको स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. These are curved lines. Now class, come on shapes. Things around us are of different shapes. Things around us are of different shapes. क्लास हमारे पास जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो अलग अलग शेप्स की होती हैं. सी क्लास, a triangle has 3 sides. Okay. And a circle has no side. क्लास ये सर्कल है. सर्कल की कोई साइड नहीं होती है, बट ट्राइंगल के पास कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं. ओके. दिस इज अ ट्राइंगल शेप. नाउ क्लास सी, a square has 4 equal sides. Class, this is a picture of a square and it has 4 equal sides. Okay. Now class, this is a picture of a rectangle. A rectangle has 4 sides. Opposite sides are equal. Class, ये rectangle की 4 sides होते हैं. 1, 2, 3, 4. बट उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं क्लास, ये और ये दोनों इक्वल है. एंड दिस ये दोनों इक्वल होती हैं. ओके. एंड ओवल हैज नो साइड. अगेन दिस इज अ पिक्चर ऑफ ओवल. ओवल हैज नो साइड. क्लास सी, एंड ओवल लुक्स डिफरेंट व्हेन यू टर्न इट. जब हम ओवल को क्या करेंगे? टर्न करेंगे तो क्या होगा? उसका ये डिफरेंट शेप हो जाएगी. उसकी लुक्स वो अपने में अलग दिखने लगेंगे. ओके. नाउ क्लास, कम ऑन एक्सरसाइज 1.3. क्वेश्चन नंबर 1. ट्रेस द डॉट्स टू मेक स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस. क्लास, यू हैव टू ट्रेस द डॉट्स लाइक दिस. ओके. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अ कर्व्ड लाइन. ओके. Rest of the parts do yourself. Yes. Now class, come on question number 2. Write the name of the shape and match them with an object with same shape. Class, see, this is a rectangle. This is a rectangle. RECTANGLE. Yes class. Where is rectangle shape object? This is eraser. Understand class? Now square. SQUARE.
A-R-E, square. Where is square shape object? It is chessboard. Now class, which shape is this? It is circle. It is circle. Where is circle shape object? It is here. Now, which shape is this? It is oval. O-V-A-L, oval, and it is egg. Now class, which shape is this? It is triangle. Triangle, triangle, and object is sandwich. Okay. Now class, come on, solid shapes. Some solid shapes are as follows. Class C. A cuboid has 6 faces. Class cuboid के कितने faces होते हैं? 6 faces होते हैं and 8 corners और 12 edges. 6 faces, 8 corners and 12 edges. Each face is a rectangle. और उसका एक face, सारे face जो होते हैं वो क्या होते हैं क्लास? रेक्टेंगल होते हैं. उनकी शेप क्या होती है? रेक्टेंगल होती है. See example of, let's see example of cuboids. Now a cube has also 6 faces. A cube has also 6 faces, 8 corners and 12 edges, but each face is a square. But each face is a square. See, क्यूबॉइड में जो उनका फेस होता है वो रेक्टेंगल होता है, बट क्यूब में क्या होता है? स्क्वायर होता है. Now a sphere has 0 side, 0 corner, 0 face. See example of sphere. Understand? Now class, a cone has 1 vertex and 1 face. Face is a circle. Face is a circle. See the example of. See. Understand class? See vertex. इनका एक ही vertex होता है. See. Now a cylinder has no corner and 2 faces. Each face is a circle. Each face is a circle. See. Understand? See. This is the. Now solids have 3 dimensions. क्या solids की जो 3 dimensions होते हैं क्या क्या? Length, width and height. Length, width and height. Now class, rolling and sliding. Rolling and sliding. Class C. The object with round surface can roll. Class like ball. अब इसका जो surface है वो गोल है, तो वो क्या कर सकता है? रोल कर सकता है इसके ऊपर. Then ठीक है सी. Now the object with flat surface can slide. जिसका surface क्या होता है? Flat होता है. Like brick, book. ओके, सो क्या होगा? स्लाइड करेंगे. और जिनका सरफेस राउंड होगा, गोल होगा, तो वो क्या करेंगे? रोल करेंगे. अंडरस्टैंड क्लास? नाउ क्लास कम ऑन एक्सरसाइज 1.4. क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Now a sphere has class no corner. Now B part, a cube has 6 faces. Now C part, a dash has 1 vertex, it is cone. C-O-N-E, cone. Now, a cuboid has 12 edges. A cuboid has 12 edges. Now, ice cream is an example of ice cream class C. Ice cream is an example of cone. Understand? Now, come on, question number 2. Take right the object that will roll. जो roll कर सकते हैं, जिनका surface क्या होता है? Roll होता है, round होता है जिनका surface. Class C, ball and orange. Cross the object that will slide. Class slide means जो slide कौन सा object करेंगे? जिनका surface क्या होता है? Flat होता है. So it is dice and geometry box, because apple is round in shape and this is also round in shape. Okay class? Now class, your chapter is completed. Prepare it very well and we will meet you in next class. Thank you.